Welcome to XMB, and in this video we'll see the recent monetary policy update of August 2023. So we'll see what all changes have been made and कौन-कौन सी areas में कौन-कौन से updates दिया है RBI ने, and also RBI has given a bird view of what RBI has been undertaking in the last few years. So we'll discuss in details. Let us start our session. So in this video, we'll see, why this news is important, then highlights domestic economy and highlights outlook and inflation, and statement on development and regulatory policy. And there is a catch here as far as the statements are concerned. We'll see when we'll be discussing the statements. We'll start with the important highlights. So if you have not subscribed to our channel yet, please subscribe and press the bell icon. If you have any queries, hello@exambit.com is our mail ID. You can simply mail us your queries with respect to your examinations or any doubts regarding your preparation. So पहले हम देख लेते हैं why this news. So अब जैसे कि हमने देखा RBI monetary policy meeting highlights. So recently it happened. So there are a lot of important updates that happened with this monetary policy update. So for that reason, it is very important for us to read about it, and especially for those candidates who will be appearing their RBI Grade B interview. So there are a lot of content from which the questions can be asked in your interview. So we'll be covering all the aspects in details. Also, in the description section, you will be finding one link where you can download the PDF of this particular session as well, so that it will be very helpful for you to for your revisions. So we'll start with the highlights assessments of domestic economy. So every other updates, we'll first start with the domestic economy updates. So you can see here, as far as the domestic economy is concerned, the first statement is given: domestic economic activities maintaining resilience. Okay, so this is a good news for the market, good news for the Indian economy. So as far as the numbers are concerned, the index of industrial production, or IIP, expanded by 5.2% in May, while core industries output rose by 8.2% in June. So I'm sure you must be aware what are those core industries we are talking about. So you can simply put your answers in the comment box, that what are these core industries. Okay. Then you can see here urban demand. As far as the urban demands are concerned, it remains robust, with domestic air passenger traffic and household credit exhibiting sustained double-digit growth. So all over the demands in the economy is increasing. And as far as the headline CPI is concerned, CPI inflation picked up from 4.3% in May to 4.8% in June. So the inflationary pressure is still there, we'd say. As you know, the cutoff is 2 to 6%, and it is well within the cutoff. It is 4.8% in June. But we'll see what are those sections of our economy, market के ऐसा कौन-कौन से sections है जहाँ पे जो inflation का impact बहुत ज़्यादा दिख रहा है. Okay, we'll see that. You can see here, driven largely by food group dynamics on the back of higher prices of vegetables, eggs, meat, fish, cereals, pulses and spices. So ये जो increment हुआ है 0.5% का, 4.8% in June may not look very aggressive, but the prices of all these things like vegetables, eggs, meat, ये increase हुआ है. And ये इतना important क्यों है? Because it is directly impacting the common man's life. Okay, fuel inflation softened during May June, primarily reflecting the fall in the kerosene prices. Core inflation जब हम CPI से food and fuel को exclude करते हैं, why? क्योंकि ये हमें पता है कि the variability ये बहुत होता है इसमें food and fuel में. When you exclude food and fuel from the CPI, what you get is core inflation. Headline inflation is जो inflation हम country में inflation count करने के लिए use करते हैं. तो headline inflation से when we exclude food and fuel, what you get is our core inflation. So it was steady in June. मतलब मई के हिसाब से ही it was kind of steady in June. बहुत सारा इधर उधर नहीं हुआ है sorry, but headline inflation increase हुआ है, and especially with respect to your vegetables, eggs, meat, all those prices. Okay, so the daily absorption of liquidity under the liquidity adjustment facility averaged at 1.8 lakh crore during June July as compared to 1.7 lakh crore in April May. तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से हमें पता है कि आरबीआई एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी, और इन केस इट इज नीडेड
लिक्विडिटी मार्केट को देता भी है। तो वी कैन सी द एवरेज कितना डेली बेसिस में 1.8 लाख करोड़ का एवरेज डेली एब्जॉर्प्शन हुआ है। So these are the basics and major importance of domestic economy, major updates of domestic economy. Now let us discuss about the outlook. So you can measure the spike in vegetable prices is again discussed here. Going forward, the spike in vegetable prices led by tomatoes would exert sizable upside pressure on the near-term headline inflation trajectory. So when we are talking about outlook, the increase in the vegetable prices, especially the tomatoes, we have seen that in certain places it has gone beyond 200, in certain cases 250 per kg. So for that increase in the tomato prices, a near-term headline inflation trajectory we can see, as far as the outlook is concerned. So there is a term that is called skewflation. Skewflation is when we experience inflation in certain categories of products. For example, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tomatoes का price increase हो रहा है और the prices in the vegetable section is increasing. So that situation is called skewflation. So for that purpose, the increase in the price of tomatoes, we can see a near-term headline inflation trajectory. So CPI inflation is projected at 5.4% for 23-24, with the second quarter at 6.2%, third quarter at 5.7%, and the fourth quarter at 5.2%. So you can see here 5.4% and an increasing trend in the next. We have seen here increasing trend, 6, 5.7 and 5.2% is this increasing trend because of this spike in the vegetable prices. Sorry. Then looking ahead, the recovery in Kharif sowing and rural incomes, the buoyancy in services and consumer optimism should support household consumption. तो household consumption को अच्छा खासा boost मिलने वाला है. So that is what it is saying. And real GDP growth for 23-24 is projected at 6.5%. Okay, because of this particular household consumption बढ़ने वाला है. Okay, household consumption जब बढ़ता है क्या होता है? The overall demand in the economy is increasing. Okay, overall demand increase होने से we see the supply also gets increased eventually, and higher number of goods and services are produced in the economy. So 6.5% is first quarter 8, second quarter 6.5% is quarter 3 6, quarter 4 5.7% is, and the real GDP growth is projected at 6.6% is for 24 and 25 का first quarter. Okay, you can see here 6.6%. Now let us again talk about inflation here. So what are those key factors that is impacting our inflation trajectory? जो inflation का हम आगे का देख रहे हैं इस साल का या next year 24-25 का, what are the key factors that is that plays an important role? First चीज क्या है? On account of supply disruptions due to adverse weather conditions. तो हमेशा आप ये points याद रखना कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, दिस में भी ऑल्सो आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें लग रहा है कि जिससे लग रहा है कि हमें इन्फ्लेशन और बढ़ेगा इन द कमिंग टाइम्स. एक हो गया एडवर्स वेदर कंडीशंस. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी विजिलेंट अबाउट दिस शॉक्स विद रेडीनेस टू एक्ट अप्रोप्रिएटली. तो ये कहा गया है कि यस ऑलवेज रेडी. एंड क्या क्या इश्यूज हैं, ये जो वेदर कंडीशंस का जो एडवर्स शॉक्स वे सीइंग, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्यूड साउथ वेस्ट मॉनसून. जो साउथ वेस्ट मॉनसून है that has been skewed, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है that is not uniform throughout the country. जिस जगह पे जितना होना चाहिए बारिश वो नहीं हो रहा है. Though the amount of rain we are getting is that is normal, but ये जो इसका जो distribution है that is not even. Okay, then a possible El Nino event, upward pressures on global food prices. El Nino event से again it is a climatic impact होता है. El Nino जब होगा फिर the rain pattern would be again changed. ठीक है, तो overall global food prices will be impacted. Okay, and also geopolitical hostilities, हमें पता है रशिया यूक्रेन वाला issues and all those issues that is happening geopolitical. So ये देख लिया हमने adverse weather conditions, उसमें क्या क्या आ गया, साउथ वेस्ट मॉनसून एंड एल निनो, एंड अगेन जियोपॉलिटिकल हॉस्टिलिटीज. फॉर दैट पर्पस ये मेजर चीजें हैं फॉर to increase the inflation. The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%, but with preparedness to undertake policy responses so the situation warrant. अगर situation चाहिए तो they are ready, but the policy repo rate is unchanged at 6.5%. Okay.
So you can see here all these members who has voted in support or in against. Okay, the minutes of the MPC's meeting will be published on 24th August. Details में आपको तब मिल जाएगा. And the next meeting of MPC is scheduled at 4th to 6th of October. Okay. Now we'll see statement on developmental and regulatory policies. Usually हम क्या देखे हैं, हमेशा ये तीन पॉलिसीज हमेशा मिल जाता है. इसमें स्टेटमेंट जो आता है फिनेंशियल मार्केट्स पे, रेगुलेशन पे, पेमेंट सिस्टम्स पे. ओके, ये तीन तो मेजर अपडेट्स हमें मिल जाता है. लेकिन इस बार दे हैव इंक्लूडेड अ फिनटेक एंगल. तो लेट अस सी नाउ व्हाट आर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज. इसमें एक्चुअली जो लास्ट के 1-2 साल में जो मेजर डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी चेंजेस हुआ है, दे डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल. First thing is about the financial markets. Okay, in June 2019 RBI issued a regulatory framework on administration of significant benchmarks. तो ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाले थे फॉर सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स इंक्लूडिंग यहाँ पे आप देखते हो USD INR रेफरेंस रेट, ओवरनाइट मिबोर और वैल्यूएशंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इसके ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाले थे कब, 2019 में. कंसिडरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट सिंस देन, तब से जितने भी चेंजेस हुए हैं डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट as well as in the global best practices में जितने changes हुए हैं, the regulations for the financial benchmarks have been reviewed and it has been decided to put in place a comprehensive risk-based framework covering administration of all benchmarks related to foreign exchange, interest rate, money market, government securities. ये सबको मतलब अभी जितने भी डोमेस्टिक मार्केट में चेंजेस हुए हैं as well as the changes that happened in the global, तो इसके लिए हमें क्या है, comprehensive risk-based framework we need. Okay, and revised directions which are being issued separately. ये फिर क्या होगा, हर एक चीज के लिए. We have seen starting from foreign exchange to interest rate, money market, government securities, benchmarks on certificate of deposits rates, repo rates, forex options. तो इसके लिए revised directions will be issued separately. Okay, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफ द चेंजेस. ठीक है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके चेंजेस के हिसाब से we need to be prepared, we need to be फुल प्रूफ ऑफ आवर सिस्टम. ओके, जो चीजें गवर्नेंस, ओवरसाइट अरेंजमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी, ये चीजों को एटलीस्ट वो इट विल लीड टू ऑल दिस थिंग्स. ओके, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट्स का. देन आ जाते हैं रेगुलेशन एंड सुपरविजन पे. फर्स्ट विल स्टार्ट विद रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ NBFC's इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स. ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी हियर the revised framework envisages withdrawal of requirements of a sponsor for the IDFs. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स जो हैं, तो उसमें अगेन फ्रेमवर्क का चेंजेस ला रहे हैं. तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, withdrawal of requirement of a sponsor, मतलब whenever you are creating a debt fund, infrastructure debt fund, sponsor की requirement we are doing away with it. Permission to finance toll operate transfer projects as direct lenders, access to ECBs, making tripartite agreement optional for PPP projects. So all these changes are being happened in the NBFC infrastructure debt funds. Then responsible conduct in lending, greater transparency in interest rate reset of EMIs based on floating interest rates. Sorry. तो यहाँ पे जो framework नया आ रहा है, what is that? The framework envisages that lenders should clearly communicate with the borrowers for resetting the tenor or EMI and provide the option of switching to fixed rate loans or foreclosure of the loans. मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब हम फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट लोन्स है, सपोज हाउसिंग लोन है, दैट इज बेस्ड ऑन द फ्लोटिंग रेट. अभी फ्लोटिंग रेट पे कुछ चेंजेस होता है तो बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर ये टेन्योर बढ़ा देते हैं, नहीं तो EMI अमाउंट पे चेंजेस कर लेते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर. तो अभी क्या हुआ है, एज पर द न्यू फ्रेमवर्क, अभी द बैंक हैज टू इन्फॉर्म द कस्टमर. उसमें आपको रीसेट करने से पहले आपको कस्टमर का कंसेंट लेना होगा. एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रोवाइड देम दैट ऑप्शन कि भाई तुम इफ यू वांट टू स्विच टू फिक्स्ड रेट रीजिंग, फिक्स्ड रेट पे जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो, नहीं तो फोरक्लोजर लोन का ऑप्शंस भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है, ताकि ये जो चीजें ट्रांसपेरेंसी रहे एंड मोर पावर टू द कंज्यूमर्स. ओके, कंसोलिडेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सुपरवाइजर डेटा सबमिशन. अभी जितने भी सुपरवाइज्ड एंटिटीज हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, दोज आर द डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे सुपरवाइज्ड एंटिटीज हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, UCPs, AIFIs, ये सारे सुपरवाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसमें क्या है, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं. यहाँ पे यू कैन सी इशूड सेवरल गाइडलाइंस इन इंस्ट्रक्शंस.
तभी क्या है उसको मिला के वी आर consolidating all those guidelines and making a master file. Okay, we're creating a master framework जिसमें आपको सारे ये regulations and guidelines एक ही जगह मिल जाएगा. This is the updates with respect to regulation and supervision. Now we'll start with the payment system. Payment system में क्या है? Conversational payments in UPI. Conversational payments क्या है? With the use of artificial intelligence, with the use of artificial intelligence or AI, अभी क्या propose किया गया है? Conversational payments on UPI that will enable users to engage in a conversation with AI powered system to initiate and complete a transaction. मतलब आप AI का help लेके you can converse with the system and आप वहीं से UPI के transactions कर सकते हो. This is a very good and innovative step. ठीक है? Though it is not been finalized yet, but it is very innovative and you can always code this. Then offline payments in UPI हमें पता है UPI Lite use करके since September 2022 we are using UPI Lite जिसमें offline UPI हो पा रहा है. And now we are including near field communications technology in the UPI Lite. What are these near field communication technology? हमें पता है जब भी आप कोई चिप वाला कार्ड लेके जाते हो, हमें पता है कि जो टैप कर लेते हो ना POS डिवाइस में, दैट जिस टेक्नोलॉजी में आपका पेमेंट हो जाता है, दिस इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन. ऑल्सो द फास्टैग जिसमें आपको यूज होता है ना, आपके कार में विंडशील्ड पे लगा हुआ है फास्टैग, नाउ द पेमेंट गेट्स डिडक्टेड, दिस इज नथिंग बट नियर फील्ड कम्युनिकेशन. सो नाउ विल बी प्रपोजिंग की नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूपीआई लाइट में भी हम यूज कर पाए. एनहांसिंग ट्रांजैक्शंस लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स. स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स क्या है? जिसमें आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जब आप कार्ड यूज करते हो, हमें पता है एक CVV देते हो आप, फिर OTP देते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. बट इन केस ऑफ स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होता है. बस विद यूज ऑफ OTP आप पेमेंट कर पा रहे हो, विद जस्ट सिंगल टैप आप पेमेंट कर पा रहे हो. दोज आर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स. So a limit of 2000 per transaction and overall limit of 2000 per payment instrument ये था. अभी इट इज प्रपोज्ड कि जो 200 पर ट्रांजैक्शन है उसको हम इंक्रीज करके 500 पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो ओवरऑल लिमिट विल बी रिटेन्ड एट ₹2000. ओके, नाउ we'll talk about this fintech. Fintech में क्या है? With rapid progress in digitalization, India has embraced the concept of digital public infrastructure, which encourages fintech. हमें पता है in the last few years fintech companies को जो regulatory environment मिला है, as well as the government and RBI से जो support मिला है, उसमें जो fintech company है, they have grown like anything. Okay, तो यहाँ पे first example यहाँ पे क्या दिया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड. Loans, KCC loans with less than 1.6 lakh was started in September 2022. Project for digitalization of KCC. I'm really sorry, यहाँ पे digitalization of KCC शुरू हुआ in September 2022. तो the pilot tested end-to-end digitalization process. Pilot test कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, यूपी, महाराष्ट्र. and initial results were encouraging. अच्छा रिजल्ट इसमें मिला है. Based on the learnings from these above pilots, जो ये digitalization of KCC का results आया है, based on those results अभी क्या है? We are expanding the scope to all types of digital loans. A digital public tech platform. ठीक है, digital public tech platform is developed by Reserve Bank Innovation Hub. तो ये public tech platform बनाया जाएगा जिसमें सारे digital loans का details and everything will be there. A platform would enable delivery of frictionless credit by facilitating seamless flow of required digital information to lenders. तो in case these are the certain lenders, they need यहाँ पे कुछ customers हैं and they need a lot of information from these customers. हमें पता है कि अगर ये customer जाके इनको approach करता है, what kind of information will be there? सारा information उसका starting from their residence, कैसा income है, कहाँ से income है, salary कितना है, कौन सी कंपनी है, all those details, then KYC, then all those security questions, ये सारे रहते हैं. But with the use of public tech platform, ये जो information होगा that will be on this particular platform ताकि हम seamless flow of data कर सकते हैं. ठीक है, and this will be also open as API, application programming interface के हिसाब से भी आप use कर सकते हो, to which all financial sector players can connect seamlessly. plug and play model पे ये use करके the lending process can be very smooth. ठीक है, this was the update on fintech. This is a very important public tech platform.
तो इसको आप अपने if you are preparing for RBI 24, you can also utilize all these terms in your descriptive answers, or for interview candidates this is very important. Agar if you are anywhere related to fintech, you can always quote these examples. Okay. So this was the all about the MPC update. iExamB always helps unfold your true potential. Thank you and all the best.